হাই গাইজ, গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, নমস্কার। আজকে আমরা ডিসকাস করতে চলেছি এলিজিবিলিটি আর সিলেবাস অফ জিডিএস টু এমটিএস অ্যান্ড জিডিএস টু পোস্টম্যান স্ল্যাশ মেইল গার্ড। এলিজিবিলিটি জিডিএস টু এমটিএস হচ্ছে আপনার সার্ভিসের 3 বছর কমপ্লিট হলে আপনি এমটিএসের পরীক্ষার জন্য উত্তীর্ণ হবেন, আর সার্ভিসের 5 বছর কমপ্লিট হলে আপনি পোস্টম্যান एग्ज़ामेर জন্য एलिजिबल हबेन। सर्विस से 3 बছর माने होच्छे सर्विस का 3 साल का मतलब होता है आप जब ज्वाइन करते हो उसके बाद 1 जनवरी से आपका सर्विस कितना दिन टेन्योर हुआ है उसके बेसिस पे आपका 3 साल गिना जाता है। और ऐसा ही सेम पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए आपका ज्वाइनिंग का डेट से उसके बाद वाला 1 जनवरी से वो सर्विस का टेन्योर आपका गिना जाता है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ज्वाइनिंग एज ए जीडीएस 30 मार्च 2024 है तो उस साल को नहीं गिना जाएगा। उसके बाद वाला साल यानी कि 1 जनवरी 2025 से आपका टेन्योर स्टार्ट होता है। 25, 26, 27 आपका 3 साल कंप्लीट होता है। आप 2028 के एग्ज़ाम के लिए जीडीएस टू एमटीएस आप एमटीएस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हो। और वैसा ही सेम 5 साल कंप्लीट होने से आप पोस्टमैन एंड मेल गार्ड के लिए आप एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिलेबस। एज पर सिलेबस देर इज़ न्यू रिवाइज्ड 2022 रिवाइज्ड एडिशन ऑफ सिलेबस वी हैव गॉट फ्रॉम डाक भवन संसद मार्ग न्यू दिल्ली। सो 2022 के बाद न्यू सिलेबस न्यू पैटर्न के हिसाब से 2023, 2024, 2025 ये 3 साल एग्ज़ाम हुआ है। तो एज़ पर सिलेबस अगर हम लोग देखें एमटीएस एग्ज़ाम के लिए आपको ओनली पेपर 1 देना पड़ता है, और पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 तीनों पेपर आपको देना पड़ता है। तो पेपर 1 में है आपका 2 पार्ट, एक है पार्ट ए, एक पार्ट बी। पार्ट ए में आता है डिपार्टमेंटल रूल्स रेगुलेशन, जिसके अंदर आता है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, पीओ गाइड पार्ट 1 और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। पीओ गाइड पार्ट 1 को फिर 2 हिस्सा में भाग किया गया है, एक पीओ गाइड पार्ट 1 और एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो पीओ गाइड पार्ट 1 में आपको पढ़ना है सेक्शन 1 क्लॉज 1 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्लॉज 1 कंट्रोल, क्लॉज 2 टाइप ऑफ ऑफिसेस, क्लॉज 3 नाइट पोस्ट ऑफिसेस, क्लॉज 4 मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस, क्लॉज 5 नॉर्मल वीकडेज, क्लॉज 6 deleted, clause 7 business on Sundays, clause 8 post office holidays, clause 9 desirability of prepayment of postage, clause 10 postage stamps and stationery, clause 11 franking machines, clause 12 prepayment of postage in cash, clause 13 spoiled or defaced stamps, clause 14 fictitious stamps, general rules as to posting, clause 15 packing, clause 16 sealing, clause 17 posting of coins etc., clause 18 train and steamer letter boxes, clause 19 posting in special letter boxes, clause 20 presentation of official and other letters in bulk, clause 21 articles requiring special treatment, clause 22 desirability of posting early, clause 23 manner of affixing postage stamps, clause 24 non-postal stamps, charity stamps, labels, seals etc., clause 25 use of the minimum number of postage stamps, clause 26 methods of addresses, particulars to be furnished, clause 27 mails for defense service personnel, clause 28 mails for navy personnel, clause 29 articles bearing indefinite address, clause 30 addition of sender's address, clause 31 intimation of address to correspondence abroad, clause 32 object in issuing certificate, clause 33 manner of obtaining, clause 55 post boxes, clause 56 post bags, section 2 क्लॉज 133 पैकिंग, और उसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 147 पैकिंग, 148 ह्यूमन एंड अदर विसेरा, क्लॉज 149
plague cultures and anthrax spore vaccine. Clause 150 tuberculosis sputum. Clause 151 strong smelling articles. Clause 152 celluloid. Clause 153 osmic acid. सेक्शन 3 ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के अंदर आता है क्लॉज 198 कंडीशंस, 199 अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स, 200 ऑफिशियल्स एंटाइटल्ड टू यूज सर्विस स्टैम्प्स, 201 लोकल फंड ऑफिशियल्स, 2002 clause 202 procedure if ordinary stamps are used for service stamps, clause 203 letters etc from government officers to private persons and vice versa, clause 204 postage due articles, correspondence for the president, vice president, ministers of the central government and certain high government officers when on move, clause 205 camp articles and special bags, clause 206 tour programs of high officers entitled to special bags, clause 207 articles for persons accompanying high officers on tour, clause 208 is deleted. Next section 4 which comes prohibited articles. Under that clause 209 general prohibitions, clause 2010 local prohibitions, clause 211 treatment of injurious articles, clause 212 treatment of prohibited or dutiable articles, clause 213 articles bearing thereon any matter which is prejudice to the maintenance of law and order, clause 214 articles which have anything written, printed, impressed or attached to the address side. This complete PO guide part 1. With that we have to complete product and services, mails, banking, remittance, insurance, stamps and businesses. References India Post website. From that 23 questions will come, each carry 2 marks. And next postal manual volume 5, under that from ruling 1 to ruling 57A trial cards are included in the syllabus, from where you will get 7 questions. मतलब कि लगभग 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे पीओ गाइड पार्ट 1 और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और मैनुअल वॉल्यूम 5 से, मतलब 60 मार्क्स विल कम फ्रॉम पार्ट ए और बाकी के 40 मार्क्स पार्ट बी यानी कि जनरल अवेयरनेस, नॉलेज और बेसिक अरिथमेटिक से आपके पेपर में आएंगे. Paper 3 was also included in the syllabus, but recent pattern paper 3 is excluded. Paper 3 निकाला गया है. आपको सिर्फ पेपर 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है जीडीएस से एमटीएस बनने के लिए. नेक्स्ट जीडीएस टू पोस्टमैन. इसके साथ आपको पोस्टमैन एग्ज़ाम एलिजिबल होने के लिए पीओ गाइड पार्ट 1 वहाँ से 5 क्वेश्चंस, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 वहाँ से 10 क्वेश्चन, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 वॉल्यूम 7 वहाँ से 10 क्वेश्चंस. मतलब कि आपको 25 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, मैक्सिमम 50 मार्क्स आपका पेपर 2 आपको देना है अगर आप पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हो तो. पीओ गाइड पार्ट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है? Clause 35 to 50, clause 67 to 73 and clause 89, 90, 91 section 1 PO guide part 1 आपको पढ़ना है. नेक्स्ट पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 जहाँ से 10 क्वेश्चंस विल कम. पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 में आपको पढ़ना है रूल 86 हेड पोस्टमैन, रूल 87 नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, रूल 88 सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरिड, रूल 89 पोस्टमैन्स बुक, रूल 90 address to be noted on articles, rule 91 damaged articles to be noticed, rules 92 receipts for articles issued for delivery, rules 93 book of receipts for intimations and notices delivered, rule 94 instructions for deliver,
Rule 95, realization of postage before delivery. Rule 96, receipts of address for registered articles delivered. Rule 97, delivery to illiterate addressees. Rule 98, Rule 99, delivery of insured articles addressed to minors. Rule 100, payment of e-money orders. Rule 101, payment of e-money orders by pay order. Rule 102, e-money order addressed to minors. Rule 103, payment of e-money orders addressed to persons without hands or fingers. Rule 104, payment of e-money orders and delivery of registered letters to lunatics. Rule 105, responsibility for correct delivery of articles and payment of e-money orders. Rule 106, loss of articles reported. Rule 107, return of undelivered articles. Rule 108, payment of postage and sums realized from addressees. Rule 109, penalties for detaining articles. Rule 109, penalties for neglect of duty. Rule 111, details of Postman mobile application PMA app. Rule 112, additional duties of Postman. And the last duties of village postman is described in Rule 133 of Postal Manual Volume 6 Part 3 old version. So this is the complete syllabus of Postal Manual Volume 6 Part 3, from where 10 questions will come and each will carry 2 marks. हर एक क्वेश्चंस का 2 मार्क्स कैरी करता है, और जहाँ से आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 से 10 क्वेश्चंस आएंगे, और इसके बाद पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 जहाँ से आपका 10 क्वेश्चंस आएंगे. ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, मतलब 20 मार्क्स आपका यहाँ से आएंगे. तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 में आपको पढ़ना है रूल 20, चैप्टर 2, रूल 20, stamps and seals. 22, portfolio and its contents. 23, stationery. 28, preparation of daily report MS 83. Rule 39, mail abstract M42 for transit sections and M43 for mail officers. Rule 40, exchange of mail. Rule 41, cage TV. Rule 42, disposal of mails addressed to a section or mail office. Rule 45, Rule 45, closing of transit bags. Next, chapter 4, transit sections and transit mail office. Rule 105, duties and responsibilities of the mail guard or mail agent. Rule 115, final duties before quitting van or office. Rule 115A, computerized transit mail office. Under that, point 1, duties and responsibilities of the system administrator. Point 2, duties and responsibilities of head mail agent. Rule 3, duties and responsibilities of mail agent. And last, chapter 5, record office, B orders and TB orders. Rule 137, B orders and TB orders. So this is the complete syllabus of Postman Mailguard paper 2, and who are giving Postman Mailguard, they have to appear for paper 3. मतलब जो भी GDS या फिर MTS पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हो, पोस्टमैन एग्ज़ाम देते हो, तो उनको पेपर 3 भी देना है कंपलसरी. दैट इज़ नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज. लोकल लैंग्वेज के अंदर क्या क्या आता है, आपको वोकेबुलरी इंग्लिश जानना पड़ेगा. इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच. Multiple choice questions, translation of words from local language to English, or letter writing in local language in 40 to 50 words. और एक essay, a paragraph or short essay in local language of 40 to 50 words. ये कंपलसरी है. और एक पेपर 4 है जो DEST, मतलब जस्ट टाइपिंग टेस्ट, वो जस्ट नॉट कॉम्पिटिटिव, जस्ट अपियर करना है बस. सो थैंक यू. फर्दर डिटेल्स अगर आपको जानना है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल पोस्टल प्रमोशंस.
और या फिर आप फर्दर कांटेक्ट कीजिए हमारे नंबर पे 8617411624, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो 8617411624। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।